people come to us, see us with an awe, fear us, like us, they want to share, but the best comment I get from them is they say, sir, now we will also have to change. In a field, whether it is field of education, it is related to industry, it is related to health, it is related to any field, you have to take some calculative risk. Available in India, there are strict rules regarding that, but definitely with coming years, India is going to be a very emerging country. We together with all these manufacturers do strive a lot to give your new products globally at par so that we can also be as smart as the other part of the globe is. Thank you. Can do all those things, whatever is required to become an entrepreneur. And to become an entrepreneur, what is required, we all know. लेडी का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, तभी वो सही और गलत समझ पाएगी, उसको खुद को ये ज्ञान होना चाहिए और उसी के बिहाफ पे वो अपने आगे डिसीजंस ले सकती है। सरकार द्वारा बनाई हुई जितनी भी योजना है उनका उपयोग भी वो तभी कर पाएगी जब तक उसको उसके अधिकार नहीं पता होंगे और उसका एक ही मात्र जरिया है एजुकेशन। परिचित इस बात से कि निजी स्कूल जितने भी पूरे भारतवर्ष में चलाए जा रहे हैं 70% शिक्षा जगत की अहम भूमिका वही निभा रहे हैं और 30% सरकारी विद्यालय जो पूरे देश में चल रहे हैं वो निभा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार हो जो सबको साथ लेकर चलने की दिशा में काम करे और इस दिशा में हम सब लोग मिलकर प्रयास करते हैं। मैं अधिक न बोलते हुए यहाँ पर आप सभी से आग्रह करूँगा कि श्रम संबंधी अगर कोई समस्या आपको नजर आती है, आपको लगता है कि यहाँ पर ये सुधार की आवश्यकता है, आप सभी से मेरा आग्रह है इस संदर्भ में कभी भी आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारे साथ बैठकर बातें कर सकते हैं और हमको सुझाव दे सकते हैं इस काम को एक ढंग से निस्तारित करना चाहिए। Manipal University, Jaipur, Rajasthan, to share his insights on role of private universities in meeting society needs. Dr. SANDEEP Sancheti. Thank you so much for the invitation. Thanks to the organizers for giving us an opportunity to talk to you, share our thoughts on the role of private universities in meeting the societal needs. Moving ahead from the first talk, which was highly personal in nature possibly, this is highly public in nature in the sense that we are talking about the society here. We all understand that we are living in a world which we call it knowledge-driven or knowledge society or knowledge-based society, and therefore the education becomes the foundation for that knowledge society. Education is the key to success, and every day, every now and then we come across various experimentation where the people who are in position are trying to make sure and help the needy students in terms of education. That's the best service you can give to a needy. Yes, you can feed them. Yes, you can give them good health.
for some time and take care of them. You can give them clothes and shelter, but if you give them the education, probably you have given them the life. And that is what we try to do. And that is the reason why what we call the gross enrollment ratio of the country is improving. I'm sure many of you are familiar with this term. Every now and then gets quoted in the newspaper, and I must tell you that from 2010, where it was hovering around 11-12%, today we are reaching close to 25%. The gross enrollment ratio has doubled in the last 7 to 8 years, and that's a huge benchmark of our success, that how we are promoting education. However, I must tell you or warn you here that the quality still remains a concern, but the quantity has started happening, and I believe, or we believe, that the quality will be getting churned out from the quantity once it stabilizes or reaches a certain stability point. So it's very important that we create infrastructure, we create support system, we create what we call teachers, or bring people to the fold of teaching so that the education becomes sustainable or possible. Even if it's not sustainable, it's possible. So what are the key elements where everyone is working? They are working on equity, they are working on access, they are working on affordability, and they are of course working on the quality of education. By the way, these are the dreams which government has, not necessarily you and me. Everyone has, government has, they represent us. And equity is something where everyone gets a fair representation. Government institutions are master for that, and I've served government institutions for more than 28 years. In fact, led some of them in recent years, and recently I moved to the Manipal University, Jaipur, as its Vice Chancellor or the President. So we also do in terms of equity, but we may not be as strong as government in equity. But when it comes to access, when it comes to affordability, when it comes to quality, I think the private sector is the benchmark. I'll give you an example in the end to tell why we claim that we are the leaders of the quality. I'm not making a comparison between government and private, but the topic is the role of private universities, so I'll have to have some benchmark to justify that. But access is, the private institutions are spread everywhere. I think, if I'm not wrong, sometime back, 2 years back, more than 90% of engineering institutions belong to the private sector. Some have closed down in recent times by force because of the clientele were not there. Maybe it's still around 80-85% of the engineering institutions in the country are in the private hands, and therefore they provide the access. Affordability, because the cost is very low, because the efficiency is relatively high, because the fee, etc. is decided by the government and the concerned agency, affordability is always ensured. Quality is a big question mark everywhere, even in the government institutions and the private. I'll touch base upon that particular point a little later. So why is private going to be better, or why is private going to be a key thing? I think I can give you a similar example from the schooling parlance. What has happened to our schools? I'm a product of government school, but probably I wouldn't send my kid to a government school very easily today. Given a choice, I'll go for something else. The reasons are similar in the higher education space where I work. Basically, the private universities are driven by innovation and by entrepreneurship. Innovation is, I offer courses which are upmarket, which are going to fetch them the jobs, which are going to add to their knowledge rather than just giving them a degree. Unfortunately, I come from a state where one of the largest universities of the country happens, but they are only degree awarding. No one is very, very keen to study. No one is very keen to go to classes and do something. No one is trying to create a facility. They simply know that they have to appear in the examination and ultimately get a pass result and get a degree, which is what satisfies them. The quest for knowledge is not there, and therefore all is sinking. But what we basically need is make sure that we do innovative things enough. For example, in my own university, over a period of time, we made sure that we don't do normal courses. We do the honors courses. Honors means a person has taken a decision that they want to do a higher level of education, and therefore they would like to come to us. We deliver them in a way they want. We give them lots of flexibilities in a way they want to learn. They can make very difficult combinations of music with electronics and economics. All those things we are trying to attempt. And that is why this innovation in the private is much higher compared to the government. Similarly, the entrepreneurship. We invest money first. We take decisions which are wise and which are good for everyone,
invest in that and make sure that they fructify. In government, it doesn't happen. In government, generally speaking, when they find that something is becoming successful, someone will say, okay, let government also do that. And therefore, the private universities become leader because of their innovation and entrepreneurship. And we, of course, like any other institution, meet the societal needs of training, skill, education, R&D, name it anything. We do consultancy, we do testing, we do obviously all kinds of activities which comes under our umbrella, and we are very open because I can say that today I have in less than 6 years, I have a student strength of close to 8,000 students, whereas our fee is reasonably high compared to most of the other institutions, and around close to 500 faculty members. And if I have a pool of 500 such faculty members, obviously I can do wonders in interdisciplinary skills or doing something for the society. We are also more autonomous. We are also more dynamic. We are also changing fast. Autonomy is a feature. You talk to any, I'm sure some of you are academicians here already. The moment an academician is given a wish that what do you want to demand, I think the word they would utter is give us autonomy. That is the nature of what they demand. So in our case, the autonomy is already there with us in big number or big way. And then of course we use it to fructify in a much better way. So autonomy is something which helps us, and therefore we are more dynamic. We change the subjects. For example, I can say that in the entire Rajasthan or maybe in the north, we don't find liberal arts being promoted. And we are the first one to do it. Maybe there are 1 or 2 universities, but I'm saying in a broad spectrum of things, such courses are not there. Such courses are not there where the honors are being promoted. Today we are ready in Manipal University, Jaipur, that we will be offering branchless engineering. You understand that those who have been vying for engineering, they go to good institutions, but then they are confused about branches. When they get a branch, next year they find that this branch is not of their interest and use. And even if everything is right, they find that this is not fetching them the jobs. So we want to experiment with such things in our institution because we have that freedom and we have the dynamism. And we hope that as a private sector, we'll be the leaders in our own way. We are very fortunate that the government of Rajasthan, which possibly has the highest number of universities in the country, did not have many recognized universities, and therefore they invited the Manipal group something like 8-10 years back. And 6 years back, we established our campus there, started our operation. And today, a lot of people come to us, see us with an awe, fear us, like us, they want to share. But the best comment I get from them is they say, sir, now we will also have to change. And the moment they say that we'll have to change, we also come forward to them by saying that whatever you need from us in terms of information, development, expertise, please count on us, because if every institution in the region becomes good, Rajasthan or Jaipur or any other place in India could be the biggest hub of education, which is what we want to happen, which is what the government wants to happen, and therefore we are there with you. So obviously, we work with higher efficiency, we work with higher speed, and obviously, very swift decision making, and that's the feature of the private university. And therefore, society is very fast changing. The mobile has changed everything. The mobile has changed the way students would like to learn and do something. Mobile has also changed the way where the jobs and other things are there. And therefore, all in all, this dynamism or speed helps us to do certain things which are there. Finally, we also do the diverse things. Just sitting alone in a law college, not knowing about the scientific IPR, or sitting in a management and not knowing much about the information systems and production, or sitting in an engineering institution alone and not knowing about what society needs out of them are not the best thing. I may be very engineering centric in terms of my numbers, but the best projects which I have done are for the society. For example, you would like to know that there is a very famous thing called Jaipur Foot, which is present almost in more than 100 countries. Today we have already developed 3 Jaipur hands for the same agency, which are very, very cost effective, which are very frugal, and that has happened because we make engineering sit with many, many other people who decide and design such needs. That the diversity helps the private universities in a big way to do what they intend to do and also become a force to reckon with. And finally,
we do set new standards. We set new standards because we are more receptive. We go abroad. We know what the world is doing, how they are changing. We can collaborate in a much effective manner. We can park money for that. We can invite people. We have better endowments which are there. And therefore, we set better standards. Standards are something which India is lacking in terms of setting. We are always a follower, not necessarily the one who will conceive such things. And therefore, we are now setting the standards. We are now more competitive. And just to give you an example, 4 days back in the same hall, we were present here in the presence of Honorable Shri Javadekar and we received India's #2 award for the Swachhta ranking, which was very, very well publicized and which was very well received and covered everywhere. As Manipal University, Jaipur, we started working on that particular award possibly before we were conceived, before we were designing our plans in terms of what Manipal University, Jaipur is. And why I'm making a mention of that is, from the same stand, from the same place, Javadekar, when he announced about this particular awards, he in a very lighter tone said that these awards were competitive awards. Around 4,500 institutions applied for that, where we were second. And he said, when we found out and when we assessed and when we worked for the awards, we found that there was not even a single institution from government in top 50. That was a sarcastic comment. And then he said, because we also wanted to push the government institutions, we created a separate category as a later afterthought, so that we push some of the government ones in the later part to compete. So you can understand that if India is looking at top 50 institutions under certain category and none of them has a government institution, the government has to worry about that. Government has to rethink about that, and that is the value the private brings in terms of what society needs. And that is what I wanted to emphasize through this particular small interaction and also sharing my thoughts. Thank you so much for giving me this opportunity, and I'll be very happy to clarify more or answer you personally if anything from my side can add value to your learning about the higher education. Thank you. Namaskar. It's very inspiring, wasn't it? Let's do the answer. And now I would request Squadron Leader Mr. A.K. Singh, Chairman, MPS Group of Institutions, to share his insights on what are the right qualities for a successful entrepreneur. I'm not an entrepreneur. As you know, my name is Squadron Leader A.K. Singh and I represent Indian Air Force. I quit Indian Air Force in 2003, and after that, by default, I landed in something known as entrepreneurship or business. I've been requested by the organizers to throw some light on the qualities of successful entrepreneurs. But I'm here, I'm being invited to talk on entrepreneurship, though I have already declared that I'm not an entrepreneur. I'm a person from a different field. Different this thing. The lady sitting in the front row, she's my wife, NEELAM Singh. Actually, she's an entrepreneur. She should have been here, but due to some throat problem, she's not speaking. So on her behalf, she was an entrepreneur, and she started her career as a teacher, as a teaching this thing, and we both are from a very modest middle class background. She started her career from teaching, then she landed in corporate sector, medical preparatory and engineering sector with Akash Institute and some other brands. But while in Delhi, she had a very different idea, unique idea of opening a chain of hostels. So she go for that. And she opened a chain of hostels, which is a very unique type of concept in this category. She opened a chain of hostels with the name of Asha Hostels. And today, after 10-12 years, Asha Hostel has become a very big and successful brand with a great presence in Delhi as well as Chandigarh, Jaipur, Rohtak, Bathinda, and planning to have expansion in more cities with a strength of more than 350 employees in Delhi alone. So when she was in this thing and I decided to quit Air Force,
she offered me, why don't we have some venture in education industry? So with her guidance and with her advice, we decided to open some educational this thing in Agra and Uttar Pradesh. So with her, because she was already a lady and professional from education background, so we started up Dr. MPS group of institutions, which is a very successful brand now in the entire North India, and we are running very successful courses in the field of professional studies. And as the previous speaker has pointed out, the relevance of professional education and the education which creates job for the country, job for the youth, not the courses, not the degrees and diplomas and certificates which are distributed and the youth are roaming on the streets to fetch a job. So with that, this is a small story, this is a small thing I have given about how I landed in this field. But it was purely a default, purely a chance, and purely a inspiration from the lady sitting in the front row. May I request all of you to have a clap for her. Now, we are also in education sector, so we are also producing a lot of professionals in the field of management, information technology, biotechnology, tourism, hotel management, and many other fields. But the problem is that every student who is coming to take education wants to be a job seeker. He wants to get a good lucrative job, lucrative package, and he just wants to get a good career and good job in industry. But nobody wants to become a job giver or entrepreneur. So this is something in this country. I personally feel that the mindset of the youth is to get job, not to create jobs. So people in this gentry, people in this hall, I really compliment you all of you that you have chosen, you all have decided to become the job givers, job providers for this country. Because as we always see that our country is facing a lot of unemployment, lot of other problems of the youth. But the people who are real entrepreneurs, they are providing a boost to the economy of the nation because they are giving valuable jobs to the youth of this country. So my all compliments, all this thing goes to you. But it is really not possible to become an entrepreneur unless you have some vision, unless you have some vision in life. So entrepreneur should have some good innovation, some good vision and some ideas which can definitely succeed in the market, and then that can do well financially, professionally, and it renders a good substance to the society. So first quality which I feel that it is innovation. And it is your vision which is very essential to be a successful entrepreneur. Then I feel that a successful entrepreneur has to be a successful leader. Leadership is something which cannot be comprehended in just one word. It is a quantum. It is a mixture of many traits. Leadership. I don't want to describe leadership here because all of you know what is leadership, but for becoming a successful entrepreneur, you have to be a good leader who can lead from the front, who can give your team, your professionals in your company, your idea, who can command, control your team, and so that the organization grows and becomes a successful venture in any field. Then, one more quality which I like to mention is the capacity to take calculative risk. Because if you don't have this quality in you, you can't become a successful entrepreneur. It is very essential to take risk, calculative risk, I say. Whenever you are venturing something, whenever you are putting some investment,
in a field, whether it is field of education, it is related to industry, it is related to health, it is related to any field. You have to take some calculative risk. And risk should be that time we should not put you in trouble when you lend that venture in market. So I personally feel that three qualities: leadership, risk taking ability, innovation, vision, your courage, your confidence, everything matters to become a successful entrepreneur. But these are the prime aspects which I feel that they are required to become a successful entrepreneur. I wish the organizers of this program, CCLA and Incredible India, all the best, because they have tried to gather so many good people from Agra as well as from Delhi and other places here, and this will be a good summit to exchange our ideas, exchange our views, and exchange our vision, so that we can benefit each other and we can all try to be more successful in our field of profession or field of business. My special thanks to Mr. Ajay Sharma, Mr. Brajesh, and Mr. Madhusudan Bhatt, who have taken lot of pains. Still, I feel that if some more people were available, this could have been a mega this thing. But hopefully, some people are from Agra, so they are on the way. Mr. Mohan Dawar is also expected shortly, and ministers who are to address this study gathering, they are also on the way. They are never on time, you know. But still, we hope that this will take a good shape and we will all have a wonderful moment, a wonderful time. I wish you all the best, all my blessings to the organizers. And lastly, I would like to say one very important thing which I always believe, which is the central theme of my life, that is winds and waves. Winds and waves are always on the side of ablest navigators. जो हवाएं होती हैं और जो तूफान होते हैं, वो जितने अच्छे नेविगेटर होते हैं उनके साथ ही होती हैं. तो winds and waves are always on the side of ablest navigators. This is a message from my side. All the best. God bless you all. Jai Hind. Thank you, sir, for inspiring us. And now I would like to invite Mr. Anil Dudhwewala, Managing Director, Atmanam Auto Enterprises, to come and share his insights on automobile industry, challenges and future. Well, good noon, everybody. I am Anil from an automobile dealership in Agra, but I am going to be representing the entire automobile industry and give you a small short synopsis about what the automobile industry is. India produced over 2.5 crore automobiles in the year 2016-17. So that's how big the industry is in India. We contribute 7.1% of the GDP of India. Automobile contributes 26% of the industrial GDP in India, and it is 49% of the total manufacturing in India. We give employment to 33 million people in India. So that's big the industry is. It is a very big challenge. A lot of departments are involved, a lot of government policies affect our business. And recently you all would have seen a lot of regulations coming to our industry, which is a very, very big challenge. The industry is growing. Last year it grew by almost 5.5%, and it is expected to double by 2026. I'm pronouncing 2026 because the government policy for automobiles is 2016 to 2026. All the plannings are done for 10 years. It is a very, very challenging industry to be in.
where in India we have to compete with the global majors like Toyotas and Fords. They are all coming to India, and the sort of expertise we have here. The customers have a lot of expectations from this industry. And of course, I will not be biased when I say that the automobile industry makes the country look smarter. The way the products which we sell, everybody coming to the country does carry an impression about the sort of vehicles which are available and move on the roads. At the same time, the customer expectations from us are very, very huge and very demanding, and to keep pace with them is really very tough. The manufacturers do help us. Of course, like everywhere, we do get pulled down by the regulations from the government. Recently, I would have heard the minister saying that we contribute to a lot of pollution to the country's environment. Wherein I would like to clarify, it is not that the new vehicles which are emitting BS4, which are emitting according to the BS4 norms, they don't pollute. It is only that the old vehicles, a large population of old vehicles on the roads, which is contributing to this pollution. And the challenge, or maybe it's an opportunity, that the government is planning about. They've developed a phrase called end of life. End of life means the old vehicles which are more than 15 years old will be removed from the Indian roads, which is going to be a very, very big step. And these vehicles, the government has already framed the policy which is about to be brought into substance, and this will make the country really clean. The government has also evolved and set a deadline for the BS6 norms as to be coming in 2020. पूरे सभागार के लिए ये बड़े सम्मान की बात है कि आज हमारे बीच हमारे परम श्रद्धेय श्री संतोष गंगवार जी यहाँ पर हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्लीज एक सेशन चल रहा है, मैं जी से अनुरोध करूँगा उसे कंटिन्यू करें। Thank you. I also do welcome the minister. So, सर हम लोग इस समय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर बात कर रहे थे। मैं गर्व के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी भारत में जो यूरो नॉर्म्स चल रहे हैं वो वैश्विक स्तर के हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में we are at par with the global standards. Euro 6 has not been implemented anywhere in the world yet, and India is eyeing 2020 to implement Euro 6 norms. We are as clean as the world is, and of course the future lies of the automobile with the electric vehicles. मैं आप लोगों को ये जानकारी देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है उसमें आज की हम जो मोटराइज्ड व्हीकल्स से अगर कंपैरिजन करें तो केवल 10% मूविंग पार्ट्स होंगे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स में। सो द होल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वुड ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू थिंग। उसके साथ नया चैलेंज होगा कि उसमें बैटरीज लगेंगी, बैटरीज को रिचार्ज करना पड़ेगा। एंड आज की तारीख में उन बैटरीज की लाइफ 2 साल होती है। दे आर रिचार्जेबल बैटरीज। So the government is thinking of how they will be disposal of the old batteries, which is a very, very hazardous thing. So the government is planning about the disposal, the setting of these charging stations, but it is going to be the future of industry. The research and development is very, very huge investments are done in automobiles. Almost 20 to 25% of the revenues of automobile industry goes for the research for the future. We are very, very hopeful about the growth of our industry. As I told you, it's likely to get doubled by 2026. Currently, we are giving employment to 33 million people, which is supposedly to rise to 65 million people by 2026.
So this is what was a short thing about automobile industry. I would request you all to please understand that in India, we are at par with the global standards as far as automobile industry is concerned. We, together with all these manufacturers, do strive a lot to give you all new products globally at par, so that we can also be as smart as the other part of the globe is. Thank you so much. It is going to be very tough, but it's still, because a lot of donors are available in India, there are strict rules regarding that, but definitely with coming years, India is going to be a very emerging country with respect to IVF. It has already made its space worldwide in all the recognized universities. Indian people are doing excellent there, and a lot of people are coming to India for treatment. Also, nowadays, women have become very ambitious, they want to marry late. So, the concept of the social egg freezing is also there. Because as we all know, the aging is there is no treatment for age. So, IVF should be available, done below up to 35 years, it gives excellent result. Suppose at the age of 30 or 35, the women find a male partner, then they can go for egg freezing. That is known as social egg freezing. And even it is recommended that even the males, my son died in an accident 25 years, so they come to IVF for IVF. But we cannot give them their biological child. So nowadays, the concept is also coming where it is recommended that while you are young, you should freeze your sperms or eggs, so that in future it is required, it is always there. I think India has a lot of potential. Indians have already made their space in the whole world. With these words, I hope that India will follow the safe IVF and will become a leader in the world for the safe IVF and will bring happiness in each and every fertile country. I request Mr. R.N. Kapoor, Chairman, Manoram Autos, to come and share his insights on road safety and automobile industry. और मुझे जो चीज अपनी प्रोफेशनल लाइफ में समझ में नहीं आई, वो इंडस्ट्री के आने के बाद समझ में आई। हम जो बेवकूफियां, जो गलतियां करते हैं, ये समझते हुए कि बिजनेस करना बहुत आसान है, ये बहुत गलत धारणा है। Doing business in India is one of the most difficult tasks if you compare yourself with doing business abroad anywhere in the world. यहाँ पर जब इंडस्ट्री के लिए कोई आदमी आता है, तो सबसे पहले उसको लगता है कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या मेरा रिटर्न उसके ऊपर सेफ है कि नहीं। आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले जिन लोगों ने बिजनेस किया था और जो कर रहे हैं, मैं उनको सलूट करता हूं कि उन्होंने ऐसे एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ ऐसे कानून, कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करें जिससे रोड एक्सीडेंट के ऊपर कमी आ सके। मैं चाहूंगा कि आप लोगों को 1-2 वीडियो दिखाऊं ताकि आप उस समस्या के विषय में थोड़ी सी जानकारी रखें। एंड सभी एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि वो लोग सब सड़क का इस्तेमाल करते हैं, उनका एक कर्तव्य बनता है कि हम इस समस्या को समाधान करने के लिए अपनी तरफ से योगदान दें। To come and share his insights on entrepreneurship and option to become somebody. Mr. Sanatan Sahu, do we have him? Yes. Good afternoon, everybody. Yeah, let's be here for some time. At the outset, I will extend my sincere thanks and gratitude to the organizer for giving me this opportunity to share some views. And the topic is the entrepreneurship, an option to become somebody. What is that somebody? Everybody wants to become somebody. हर कोई इंसान खास इंसान बनना चाहता है. Everybody wants to become somebody. हर किसी को अगर मौका मिले तो एक खास इंसान के रूप में परिचय पाना चाहता है या चाहती है. Somebody का परिभाषा क्या है? What is the
definition of somebody. Somebody is that person who is having the capabilities to attain all the desires as the way he or she likes to do or attain. हर कोई चीज उनको ऐसे ही मिले जो जैसे चाहते हैं, वो कैपेबिलिटी रखने वाले इंसान को ही खास इंसान के रूप में परिचय हो पाता है, ऐसे मानना है। तो हर किसी के पास ये चाहत होता है। Saying this, the next question comes whether everybody is becoming somebody. क्या सब लोग खास इंसान बन जाते हैं? Answer is no. But anybody can become somebody. कोई भी इंसान खास इंसान बन सकता है। When I am saying anybody means irrespective of any background, irrespective of any geographical or demographic characters. It is gender or age, it is economic level, rural or urban background, qualified, less qualified, even illiterate people, whoever he or she may be, one can become somebody. Somebody को और थोड़ा सा करीब से देखने के लिए प्रयत्न करते हैं। Somebody means a healthy person. Healthy, there are 5 types of health. अपने जीने के लिए जो सारे सामान की जरूरत होता है, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले हेल्थ स्वास्थ्य चाहिए। Not only physical requirements, but also mental requirements. Everybody wants to be happy. He should be mentally very sound, very cool. He should be able to take decision. He should be able to just comply. Mental requirement के साथ साथ financial health is also very important. Financial health is having that much money which will be sufficient to do whatever one wants to do. पैसा कोई काम का रुकावट न बने, कोई सपनों को साकार करने का रुकावट न बने, इतना पैसा हर किसी के पास चाहिए, इतना फाइनेंशियल हेल्थ होना भी आवश्यक है। अगर एक इंसान खास इंसान बनना चाहता है, if one wants to become somebody. Then comes social health. Everybody wants the recognition in the society. Everybody wants that people should know him with good name and fame. Everybody wants that he or she should be a strong player in our societal game. At last but never the least, everybody wants to become spiritually strong. We believe that human life is precious, and we do not know after how many lives we have got this human life, and given a chance, one wants to attain the spirituality. Some time to think of God, the Almighty, to do certain things which can enrich our spirituality. And the health, in respect of all these 5 characters, that is physical health, mental health, financial health, social health, and spiritual health, is very much required to become somebody. Let us rate it. As a human being, let us rate it. Let us give 20 marks to each of the parameters: physical, mental, social, financial, and spiritual. And let's evaluate ourselves, how much we score. Let us be honest to ourselves.
I am holding the post of the director in one of the Government of India organization. When I started rating myself, I must feel honored to say that I secured only 32%, 32 marks. Here, many entrepreneurs are there, many intellectuals are there, and sure, they will be definitely scoring good marks. I am sure. The question comes, is that sufficient or there is any scope of improvement? Whether we can enhance our grade, that is the question. And if it is that, then what are the options? For a common man, there are different options are seen. It may be job, very good job, employment, in a very good organization, maybe very highest rank. But we know the job means just obey the boss, driven by somebody else's passion, driven by somebody else's need, requirement, instructions, wishes. Money, definitely, it ends over because the month ends. Normally. Always extraordinary examples are there, but let us talk about the normal job doers. There will be other options. Self-employed people having a lot of intellectualities. There will be the doctors, architects, engineers, freelance engineers. There will be the athletes. There will be the sports person, artists, singers, boxers, so on and so forth. They also lead significant life to us, to the best of understanding of us. But definitely, for all those people, an extraordinary quality is very much inevitable. Extraordinary capabilities, qualifications, experiences are very much required, otherwise it is really, really difficult to attain that height. At the same time, another option is there, that is setting up a business. Setting up a business, investing money, taking calculated risks with the innovative ideas, mobilizing different resources, manufacturing or supplying or both the quality products and services to the society, that is setting up a business. And entrepreneurship can be a decision to start with or to improve the current situation. Entrepreneurship decision to start one venture by investing capital and resources with a good vision, with a good dream, and to execute all the things whichever are required to build the business sustainably. A businessman dreams and fulfills it with full passion. But a question comes into the mind. Then,
whether only the job doers cannot be of that level, cannot be somebody, there is no option line, fail sometimes. There is a downfall sometimes. Then what is that? Perhaps that is the point which we need to focus upon. And to become somebody, only the business cannot be the option, but even other professions can also be the options. Who says that the job doers are not become somebody? Who can be better example than our previous president, Dr. Abdul APJ Kalam Sahab, or Air Chief Marshal Arjun? Here, one thing lies. Somebody has told that Taj Mahal has built up twice, not once. Taj Mahal has built first in the minds of Shah Jahan. He has taken decision. He has thought to build it. That has already been built in the mind of Shah Jahan, and again it got rebuilt. But we are seeing today. Similarly, the entrepreneurship is a mindset. It starts within our mind. It is a decision coming to our mind. It is a vision coming to our mind. It is a dream coming to our mind to think upon. Categorically, the entire people can be divided into two mindsets. Number one, the people having the employee mindset with owners and ownership mindset within employees. We can see that in any employment, the people will be available, although they are the employees, but they live with the mindset of owners. They own the responsibilities. Although they are the employees, they behave, they work, they think like owners. And in the other hand, you will see some failures, especially the second or third generation of the family businesses, where the failure is there. Although the people are taking bath and the owner's family, perhaps that is not sufficient, that mindset is not sufficient to take the business forward. And the failure, one of the causes is that employee mindset within the ownerships. This is very important. But the basic difference is the employee, what he does, he just interested to do whatever is assigned to do for him or her. He waits for the instructions. He carries out the work, whatever has been given to him, and he is becoming happy or expects rewards when it is successful, and on the other hand, it becomes very sad when it is not. On the contrary, the ownership mindset accept the responsibilities. It is self-starter, self-initiators. They take the initiation themselves, and they do whatever is required to do for their business. Self-initiation. He is not waiting for the instructions of others. An employee believes in holding the power and always doing the duties, and is very much keen about the rights with an expectations to expand his
power or rights boundaries. But the owner or owner mentality people believes in the responsibility and accountability for their businesses. जिम्मेदारी का एहसास उनको है. One takes credit for the good result and seek the responsibility to the others if there is a failure in the employee mindset. And in the other, the people, they just pass on the credit towards the entire team, especially followers, juniors, and shoulders the entire responsibility when there is a setback. That is the ownership. Once is time, always. How was time? With the time now and now, whether the work is over, whether my duty period is over. And he always trades his talent, his capabilities with the time. How much remuneration he or she is deserving, or how much remuneration he or she can get. This is the mindset of an employee. Whereas an owner, somebody wants to, rather everybody wants to go in the holiday trips, especially the family and friends. And I see them from one angle, how it could be if one applies for the leave and sanction the leave, one applies for the advance and sanction the advance, goes on holiday trip, if required, he or she will extend his her own leave. And after coming out, he will sanction the entire expenditure, reimburse the entire expenditure. The king of himself and king of others, it is the entrepreneur. So, ladies and gentlemen, entrepreneur is that person who with the decision of entrepreneurship can become somebody, again, irrespective of any background. Lot of examples are there. People are from the very rural background or very low income group people, even illiterate people, even at the higher age, even after 60s. Have started their business and become successful. The choice is ours. The question is only to be asked whether we want to become that somebody. If we want to become that somebody, let us check it out whether entrepreneurship can be our decision, can be one of our options. This mindset is to be checked again and again because human life is precious. We do not know what is going to happen after this. I am worried if we feel that the Indian people live up to 80 years with good mindset, with good health, if it's 75 or 76 years of age, and only 3 to 4 years have to be there, for which our body and mind can cooperate with us. If some question is coming to our mind that what I have attained or what I could have attained, there should be a satisfactory answer. 75 साल में अगर हम सोच रहे हैं कि मैंने जिंदगी में क्या पाया और क्या पा सकता था, उस समय में एक संतोष टू गेट satisfied
ourselves that yes, for which purpose we have come to this earth, we did it. And for that satisfactory answer, perhaps the entrepreneurship can be an option. Mindset is required, and this opportunity is for everybody, and everybody can also become somebody if he or she can take a decision, can do all those things, whatever is required to become an entrepreneur. And to become an entrepreneur, what is required, we all know. So there is no doubt on that. Only the thing is that the decision to become somebody. Whether we are in that position to take the decision. With that question, I will come to an end for my delivery, and thank you very much once again for giving me this opportunity. Thanks a lot. इस कार्यक्रम के तहत जो छोटे लोग थे जिनको कोई पहचानता नहीं था लेकिन काम बड़े बड़े करते थे, लोग छोटे थे लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करते थे, इनकी पूरी टीम ने उसका सर्वे करने के बाद इस कार्यक्रम में उन्हें बुलाकर उन्हें सम्मान दिया है। आने वाले समय में वो देश में और बड़े बड़े काम करेंगे, इसका प्रोत्साहन जो दिया है उसके लिए पूरी टीम इनकी बधाई की पात्र है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां इन आयोजकों के लिए, तो सबको पूरे देश में से इकट्ठा कर यहाँ पर एक मंच पर लाकर खड़ा कर देते हैं और ऐसी शख्सियतों को बुला के उनको सम्मानित कराते हैं, जिससे उनको भी अपने को गर्व महसूस होता है कि हमने कुछ अच्छा समाज में किया। अब जितने यहाँ हम लोग बैठे हैं सब आयोजक ही लोग बैठे हुए हैं, बाकी सब लोग जा चुके हैं, काफी समय हो चुका है। अधिक समय न लेते हुए, जैसा कि मेरा टॉपिक आप लोगों ने अभी डिक्लेयर किया है कि स्कूल क्वालिटी एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल्स, सभी परिचित इस बात से कि निजी स्कूल जितने भी पूरे भारतवर्ष में चलाए जा रहे हैं 70% शिक्षा जगत की अहम भूमिका वही निभा रहे हैं और 30% सरकारी विद्यालय जो पूरे देश में चल रहे हैं वो निभा रहे हैं। निजी स्कूलों की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और सरकारी स्कूलों की बात करें, गवर्नमेंट जिनको ऑर्गेनाइज कर रही है, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। जैसे मैडम ने अभी बहुत अच्छा वक्तव्य दिया और बहुत सी बातों को उसमें दर्शाया। मैं चाहता हूं कि हर देश की महिला, जैसे उन्होंने कहा शिक्षा कि हम शादी के लिए ही करते हैं या हमें कुछ अचीवमेंट करना है। प्राइवेट स्कूल की बात को उससे मैं लिंक कर रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल में शिक्षा की जाती है वो केवल शिक्षा को शादी के लिए करने के लिए नहीं दी जाती, बल्कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जाती है केवल एक मार्कशीट का पत्र उन्हें दिया जाता है बच्चों को, जो उनके भविष्य में कहीं नौकरी लगने का काम आए या उनको कहीं आगे शादी ब्याह करना हो उसमें काम आए। बच्चे का विकास, बच्चे सबके लिए बहुत प्रिय होते हैं, अपना बच्चा हर किसी को प्रिय होता है। कोई भी कहीं पर भी हो अपने बच्चे की शिक्षा में और स्वास्थ्य में समझौता नहीं करना चाहता है। हम सामाजिक संस्थाओं के मंच पर जाकर, चाहे कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो या बहुत बड़ा समाज सेवी हो, वो बात बहुत करेगा कि सरकार इतना अच्छा कर रही है, बच्चों को मिड डे मील दे रही है, खाने के लिए भेज रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़वाने के लिए पीछे पीछे भागते हैं और सोर्स लगाते हैं, मिनिस्ट्री की सोर्स लगाते हैं कि हम अपने बच्चे का किसी भी तरह एक नाम ग्रामीण स्कूल में एडमिशन कराएं, भले उसकी फीस कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें एक बार एडमिशन या बच्चे को पैर रखने की जगह मिल जाए, क्लास 12 तक वो पढ़ के चला जाए और अपना नाम रोशन करे। कभी भी किसी सरकारी स्कूल में कोई भी सरकारी विभाग का व्यक्ति जाकर ये नहीं कहता कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाकर इस स्कूल को प्राइवेट स्कूल से अच्छा बनाऊंगा और मेरा बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद नाम रोशन करेगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा RTE लागू किया गया, जिसमें 25% बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन देना कंपलसरी किया गया। यहाँ सरकार की तरफ से कोई मौजूद नहीं है, जिससे मंत्री जी आए थे, मैं कहना चाहता था उनसे कि 25% बच्चे अगर हर प्राइवेट स्कूल फ्री पढ़ाएगा तो उसके स्टाफ का जो खर्चा है, अभी हाल ही में गुड़गांव में घटना हुई है, एक बच्चे की हत्या कर दी गई। उस घटना के बाद
पूरे देश के स्कूल को सरकार उस निगाह से देख रही है जिस हिसाब से एक क्रिमिनल को देखा जाता है। अगर कोई परिचय देता है कि हम स्कूल मैनेजमेंट से हैं, हम स्कूल चला रहे हैं, तो हर आदमी दहशत भरी आंखों से देखता है कि अच्छा स्कूल चला रहे हैं। तो एक पहचान ऐसी बन गई, ऐसी बदल गई एक दिन के अंदर। घटनाएं हर जगह होती हैं, ऐसा नहीं है घटनाएं कहीं नहीं होती, परिवार में घटनाएं होती हैं, बहुत से उदाहरण है। अभी रेल घटना हुई, अभी ऑक्सीजन की कमी से बच्चे गोरखपुर में मरे अस्पताल में, काफी बच्चों की वो भी हत्या थी। लेकिन अगर निजी क्षेत्र में कहीं कोई घटना हो जाए, चाहे वो कोई इंडस्ट्री प्राइवेट व्यक्ति रन कर रहा हो या कोई शिक्षक संस्था चला रहा हो, वो मीडिया से लेकर और सामाजिक स्तर तक सारे समाज सेवियों तक वो नंबर 1 पर हाईलाइट होती है, क्योंकि उनको ये अच्छा लगता है कि चलो हम जिंदगी में तो कुछ नहीं कर पाए और ये करने निकला था तो ये भी वापस आ गया, उन्हें इस पर खुशी मिलती है। आज इस मंच से मैं केवल 2 शब्द और कहना चाहता हूँ कि हमारे सामने जितनी भी समस्याएं हैं, अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो वो रुकना नहीं चाहिए और देश की उन्नति और देश की एकता पर 2 शब्द कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि देश की अखंडता ही खंड खंड होने लगी है, एकता का एक दीप अब तो जलना चाहिए। मलय समीर जिन हवाओं ने विषैली की है, उनका जनाजा इस देश से निकलना चाहिए। धन्यवाद। We are also honored to have among us Mrs. PALLAVI FAUZDAR, world record holder biker and winner of Nari Shakti Award. Ma'am, please come and address us on. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इनक्रेडिबल इंडिया, द ब्लैक इंक, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एज ए चीफ गेस्ट यहाँ बुलाने के लिए। निसंदेह आज का दिन बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आप सभी के बीच में यहाँ आकर। टाइम थोड़ा सा कम है, बट रिक्वेस्ट किया कि कुछ थोड़ा बोलना है। बीइंग अ लेडी, मैं कहूँगी कि जो हमारा एक सफर होता है और सफर से जुड़े हुए जो संघर्ष होते हैं वो कहीं ना कहीं पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाते हैं। बीए कर लो काफी है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारी शादी ही करनी है। कमाने के लिए तो वो होगा ही जिससे तुम्हारी शादी होगी। तो इसी तरह की कुछ धारणाएं थी जो चली आ रही थी और मैं कहूँगी आज भी हैं, बिकॉज हम भारतवर्ष में हैं और आज भी सबसे बड़ा उद्देश्य अगर बेटी आज पैदा होती है तो उसी दिन से शायद एजुकेशन के लिए कम और उसके दहेज के लिए पैसा ज्यादा इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता है। आज जो महिलाएं हैं जो कुछ अपने आप में कहीं कुछ कर पाई हैं या उनका कहीं कुछ नाम है, या जैसे मैम अभी मैंने आपको सुना, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि बहुत सफर आपका भी आसान नहीं रहा होगा। कुछ अलग करने के लिए अपने आप से ही सबसे पहली जो जंग शुरू होती है, हम कहते हैं समाज से लड़ने निकले, लेकिन वो समाज नहीं होता। जो सबसे पहली जो जंग शुरू होती है वो कहीं ना कहीं अपने आप से शुरू होती है, क्योंकि दुनिया से लड़ने के लिए सबसे पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि हाँ मेरे ये सपने हैं, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये पाना है। फिर चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे आपके सपने किसी भी फील्ड के लिए हो, चाहे वो आप बिजनेस करना चाहते हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, या जैसे मेरा एक सपना था कुछ करके दिखाने का, आगरा का नाम रोशन करने का। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि आगरा सिर्फ ताज की वजह से ही क्यों जाना जाए, और भी बहुत कुछ है करने के लिए। मुझे गर्व होता है आज आगरा, अगर कहीं लोग पल्लवी सर्च करते हैं तो उसमें आगरा निकल कर आता है, तो आज एक पल्लवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पल्लवी फौजदार एक वो नाम था, और मैं इसको गर्व के साथ में कहती हूँ, जिस मिट्टी से मैं हूँ उस मिट्टी ने मुझ में इतनी ताकत दी, इतनी हिम्मत दी कि मैं विश्व की उन ऊंचाइयों पर पहुंची जहां अभी तक विश्व का कोई भी पुरुष नहीं पहुंच पाया, अकेले बाइक से। मेरी शादी हुई 2004 में। बचपन से ही मेरे विचार हमेशा क्रांतिकारी रहे होते थे कि बेटी हो बेटा ऐसे रहो, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो मेरे को ये था कि क्यों, सबसे पहला सवाल होता था क्यों।
क्या फर्क है? सिर्फ जेंडर का डिफरेंस एंड उससे अधिकार बदल जाते हैं? तो ये बात मुझे बचपन से ही समझ में नहीं आती थी। तो मैंने हर वो काम किया जिसके लिए मुझे मना किया गया। अगर यहाँ नहीं चढ़ना है तो पहले मैं चढ़कर देखूंगी कि यहाँ क्यों नहीं चढ़ना था। शायद वही सोच थी आज जो मैं कुछ कर पाई, या आज एक एग्जाम्पल की तरह, या एक कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को कहीं मेरी स्टोरी मोटिवेट कर जाती है, वही एक सोच थी। एंड उसी सोच को लेते हुए जब बड़े होते हैं आप देखते हैं कि अधिकतर लड़कियां अपने पैरों में, बोलते हैं कि समाज ने बेड़ियां डाल दी हैं, लेकिन समाज के डालने से पहले ही वो अपने पैरों में, हाथों में बेड़ियां पहनकर बैठ जाती हैं। एजुकेशन सिर्फ शादी के लिए की जाती है, क्योंकि लड़के वाले देखने आएंगे तो ये होगा भैया कम से कम लड़की एमए तो पास होनी चाहिए। तो क्या सिर्फ एजुकेशन सिर्फ शादी करने के लिए? पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ, किसने इस बात को समर्थन देते हैं कि सिर्फ शादी के लिए या आपके डेवलपमेंट के लिए? यहाँ महिलाओं की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल करती हूँ, और आप लोग बहुत सफल महिलाओं में से मेरे को यहाँ पे दिख रही हैं, चाहे वो एंकर हो जिसको कि सब लोग बहुत कान लगाकर सुन रहे थे, आप हैं जो एक वास्तु कंसल्टेंट है, मैम भी पीछे मेरे को दिख रही हैं। मेरे को लगता है कि सफर आपका बहुत आसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपकी कहानी भी बहुत लोगों को मोटिवेट कर रही होगी। ऐसा ही मेरा एक सफर इस सोच के साथ में शुरू हुआ कि अब बस बहुत हुआ। 2004 में मेरी शादी हुई थी। 10 साल लगा मुझे अपने आप से लड़ने में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोच रखती थी कि दुनिया को बदलना है। लोग कहते थे अकेले क्या कर लोगी, मैंने कहा शुरुआत कर सकती हूँ। फिर ये सवाल आया किस तरह से करोगी, क्या करना चाहती हो? बाइक चलाना मेरा शौक था बचपन से, और बाइक ही क्यों चुना वो इसलिए क्योंकि मेल फील्ड में जाकर, और उनकी कहते हैं ना कि अगेन एक सवाल था कि बाइक इज समथिंग इट्स नॉट मेंट फॉर यू, देन अगेन व्हाई क्वेश्चन केम इन माय माइंड, ऐसा क्यों? एक मशीन है, मशीन को भी आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये पुरुष के लिए कि महिला के लिए। अगर आप महिला हैं तो स्कूटी चलाइए, हीरो बुक चलाइए, लूना चलाइए, उस टाइम पे लूना हुआ करती थी। बाइक ही क्यों? जब भाई चला सकता है, पापा चला सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? मैं ये नहीं कहूंगी कि जनरेशन गैप था, सिर्फ उस पीढ़ी के लोगों ने ही रोका, नहीं, मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे थे जो मुझे बोलते थे कि जिस चीज के लिए बनी हो वही किया करो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे दुख होता था ये देखकर कि इनकी भी सोच को बदलने की जरूरत है। ये जो आज एक बीमारी जो फैली हुई है, ये भी कहीं ना कहीं इस रोग से संक्रमित है। शादी के 10 साल लगे, क्योंकि मेरे इन-लॉज को 10 साल तक नहीं पता था मुझे बाइक चलानी आती है। उन्हें पता तब चला जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए और जब मैं न्यूज में आने लगी, बोलते कोई और होगी। तो बाद में पता चला अरे ये उन्हीं की बहू थी। तो मेरी मॉम लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करें, आशीर्वाद दूं या शॉक। शी वाज इन शॉक एक्चुअली, बट जो शब्द उनके मुंह से निकले तो उन्होंने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू, बिकॉज मैं कहूँगी क्योंकि वो भी एक महिला थी और कहीं ना कहीं उन्होंने भी संघर्ष किया। मेरी सोच ये थी, 2 बच्चों की माँ थी मैं, जब मेरे दिमाग में दोबारा से यह खुराफात आई कि मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी जो लोग अभी भी ये कहते हैं कि तुम नहीं कर सकती या तुम इस चीज के लिए नहीं बनी हो। तब भी मेरे दिमाग में ये था, who are you to decide on my behalf what I can do and what not? कुछ तो मेरे लिए छोड़िए जो मैं डिसाइड कर सकूं। ऐसी ही सोच लेकर मैंने हस्बैंड से अपने डिस्कस किया कि मैं बाइक से ऐसी जर्नी पर निकलना चाहती हूँ जो अभी तक नहीं की है किसी ने। एक्सेप्ट करना लोगों के लिए बहुत आसान नहीं था। हस्बैंड थोड़ा डिलेमा में थे, क्या बोलूं? हाँ बोलता हूँ तो एक इकलौती बीवी है, ना बोलता हूँ तो सबसे पहला दुश्मन मैं ही बनूंगा इसका। लेकिन कहीं ना कहीं
मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट मिला, मेरी माँ का सपोर्ट मिला। माँ ने बस एक चीज़ ये कही, हंसता खेलता परिवार है, ऐसे एडवेंचरस जर्नी पे क्यों निकलना चाहती हो, क्यों करना चाहती हो। तो बस मैंने मेरी माँ से यही कहा, माँ कुछ ऐसे सपने थे, क्योंकि वो वक्त एक ऐसा हुआ करता था कि बच्चे अगर हैं आपके तो शादी के बाद सब कुछ आपका बच्चों का ही होता था, जिंदगी सिर्फ उन्हीं के इर्द गिर्द होती थी। औरत को सिर्फ एक त्याग की मूर्ति समझा जाता था और वो सिर्फ उसके हिस्से में आते थे तो सिर्फ त्याग त्याग और त्याग, चाहे वो अपनी पढ़ाई से लेकर हो, चाहे शादी के बाद फिर अपनी जॉब छोड़ने से लेकर हो, क्योंकि परिवार को आगे चलाना है। तब 2015 में मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करी। मेरा जो पहला रिकॉर्ड बना, मैं लद्दाख के लिए निकली अकेले अपनी बाइक पे, जिसमें मैंने सिंगल जर्नी में 16 पासेस कवर किए, जिसमें से 8 पासेस ऐसे थे जो 5000 मीटर से ऊंचाई के थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था अपने आप में। उसमें से भी 2-3 पास ऐसे थे जो जिसमें मैं पहुंचने वाली पहली अकेली महिला थी। वापस लौट कर आई उस जर्नी से, एक अजीब सी हिम्मत मिली, एक अजीब सी ताकत मिली, क्योंकि ये जो जर्नी आप कह लीजिए या ये लड़ाई आप कह लीजिए या ये संघर्ष, जो भी आप नाम इसको देना चाहें, कहीं ना कहीं सिर्फ ये मेरा अकेले का नहीं था, ये कंप्लीट वुमेन फेटर्निटी के लिए था। उन महिलाओं को जो अपना आत्मविश्वास खो चुकी थी कि हम क्या कर सकते हैं, उनको ये जताने के लिए कि आप क्या कर सकती हैं। कुछ ऐसे पुरुष जो ये सोचते थे कि आप ये नहीं कर सकती हैं और ना ही ये आपको शोभा देता है, तो उनको बताने के लिए कि क्या कर सकते हैं। वापस जब लौट कर आई, एक और ऐसा ही पास था जिसका नाम मैंने सुना हुआ था कि विश्व का सबसे ऊंचा पास माना जाता है, माना पास या डुंगरीला पास कह लीजिए, जो इंडो चाइना बॉर्डर पे है। आज तक कोई नहीं पहुंचा था। मैं भी एक कोशिश करना चाहती थी कि कितना दम है मेरे में। 2015 सितंबर में मैं गर्व के साथ में कहती हूँ कि मैं 0 पॉइंट तक पहुंची और हाइट उस पास की थी 18,774 फीट। और अकेले गिरते पड़ते मैं उस शिखर तक पहुंची, जो अपने आप में कहीं ना कहीं जो मेरे खुद के डाउट थे, मेरे को अपने आप को लेकर, मुझे भी उन्होंने गलत साबित कर दिया। क्योंकि होता है, आप समाज को जवाब दे देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर डर होता है कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हो सकता है ऑपरेशन ओटी में जब आप जाते हो, आई नो योर एक्सपीरियंस, बट फिर भी लोगों को ये लगता है कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं आप एक जगह पे आपके ईश्वर के हाथ में छोड़ते हैं। तो ऐसे ही मैंने अपने आप को सरेंडर करके ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया था। और ईश्वर में मैं कहती हूँ कि जब आप ऊपर वाले पे विश्वास रखते हैं तो वो विश्वास 100% होना चाहिए, चाहे वो अपने आप पे हो चाहे ऊपर वाले हो। जहां आज तक कोई पुरुष नहीं पहुंच पाया, उस चीज को कर पाना इतना आसान नहीं था। ऐसी क्या शक्ति थी मुझमें जो मैंने कर लिया? शायद आत्मविश्वास, शायद वो जो कुछ कर गुजरने की इच्छा थी, या मैं कहूंगी शायद जो मैं ये इच्छा रखती थी कि समाज में आज बदलाव आना चाहिए और लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारे अधिकार हमें देने पड़ेंगे। सफर मेरा जारी रहा। 2016 में भी मैंने रिकॉर्ड बनाया और 2017 की अगर आज हम बात करते हैं, 2017 में मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड नारी शक्ति से नवाजा गया। 2015 में मुझे यूपी सीएम द्वारा अवार्ड मिला, आउटस्टैंडिंग ग्लोबल वुमेन ऑफ यूपी। अवार्ड तो बहुत सारे थे, बट ये दो ऐसे हैं जो बहुत दिल के करीब हैं। और 2017 सफर मेरा अभी भी जारी है। मैंने अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड इस साल अगस्त में तोड़ा, जो विश्व का सबसे ऊंचा पास अभी तक माना पास माना जाता था, जिसकी हाइट 18,774 फीट थी। इस बार मैंने उमलीला पास पहुंचकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, जिसकी हाइट थी 19,300 फीट। और उसी के साथ में एक नया पास भी ढूंढ कर निकाला है, उसको नाम दिया बोनीला करके। बोनीला इसलिए क्योंकि जो मैं बाइक चला रही थी, क्रेडिट सबको मिलना चाहिए, आप ही को नहीं। जिस मशीन पे आप जा रहे हैं उसका भी नाम कहीं ना कहीं आना चाहिए।
ट्राइम बॉर्नवेल थी, तो बॉर्नवेल उसका बाइक का नाम था, तो उसके नाम पे मैंने बोनीला पास नाम रखा, जो अभी मेरा लेटेस्ट अचीवमेंट है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ों को जब आप मिलाते हैं, आज मैं बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही हूँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में मिलकर, 181 विमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन, जिसको रीलॉन्च किया है 100 दिन के अंतर्गत, जिसमें मैंने लखनऊ से बनारस तक राइड कवर की थी, जिसमें अभी हम उत्तर प्रदेश मतलब यूपी वेस्ट को भी कवर करेंगे, जहाँ पे फीमेल फीटस रेशियो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, और जो कन्या भ्रूण हत्या से रिलेटेड, एंड इट्स एक्चुअली अवेयरनेस प्रोग्राम एजुकेशन के लिए कि आपके अधिकार क्या हैं, बिकॉज मैं इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि लेडी का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सही और गलत समझ पाएगी, उसको खुद को ये ज्ञान होना चाहिए, और उसी के बिहाफ पे वो अपने आगे डिसीजंस ले सकती है। सरकार द्वारा बनाई हुई जितनी भी योजना है उनका उपभोग भी वो तभी कर पाएगी जब तक उसको उसके अधिकार नहीं पता होंगे, और उसका एक ही मात्र जरिया है एजुकेशन। एजुकेशन पे फोकस करना बहुत जरूरी है, और हर चीज चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, सफल बनाने के लिए मेरे 3 एक सिद्धांत हैं, या सीक्रेट कह लीजिए, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगी। बी लाइक अ स्टूडेंट। एक घड़ा है, अगर वो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, क्या उसको आप और भर सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं, वो बहेगा। तो अपने आप को थोड़ा खाली रखिए। स्टूडेंट वही होता है जो सीखने जाता है, जो हाथ यूं लेकर जाता है, ऐसे नहीं। आप ऐसे लेकर चलिए। एक क्यूरियोसिटी होती है, स्टूडेंट वो होता है जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए है, आसमान अगर नीला है तो क्यों है, ये जो सवाल होते हैं ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि यहाँ तो आप पहुंच गए, व्हाट नेक्स्ट। सेम आपकी मेडिकल फील्ड के लिए भी, आपके वास्तु के उसमें भी ऐसे ही चैलेंजेस आते होंगे। अगर ये दोष है आज, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एजुकेशन में भी आपको ऐसे ही, ये स्कीम फेल हो गई, और बच्चों को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। तो पहली चीज यही है, हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहिए, आप कभी भी पूर्ण नहीं हैं। सेकेंड चीज, आप जो भी करना चाहते हैं, जो आपका एम है, गिव योर 100%। बाय इन्वॉल्व योर हार्ट, हेड, हैंड, एवरीथिंग इनटू इट। कहते हैं कर्म से, वचन से, तन मन धन से पूरी तरीके से उसको डेडिकेटेड करिए अपने आप को, और देखिए आपको सफल बनने से कौन रोकता है। तीसरी चीज मैं कहूंगी, पे बैक। व्हाट इज पे बैक? जब आपको कुछ मिल जाता है, पे बैक टू योर सोसाइटी। आपसे जो नीचे हैं या आपसे जो जूनियर हैं, आप उनको सिखाइए। पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं होता है, बट जो आप देकर जाते हैं वो अमर होता है, और वो उस आपके साथ में, आपकी दी हुई नॉलेज के साथ में आपको भी अमर कर जाता है। आपकी दी हुई एजुकेशन हो, आपके दिए हुए, आप लेक्चर्स बोल लीजिए, या आप कहीं हुई कोई भी सिखाई हुई चीज, आपको नहीं पता सामने वाले इंसान की जिंदगी में कहाँ किस मोड़ पर उसको मदद कर जाती है, और कहाँ वो अपनी लाइफ को रिलेट करके, अपनी चीजों को जोड़कर आपके सामने एक सफल व्यक्ति के रूप में कब आकर खड़ा हो जाता है। तो ऑलवेज हेल्प अदर्स, जो आज पीछे छूटती जा रही है कहीं ना कहीं चीज। हाँ, समय थोड़ा सा कम है, मुझे जाना भी है। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। I heartily welcome to Mr. संतोष गंगवार जी, मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही स्वागत करता हूँ यहाँ आए सारे डेलीगेट्स, डिग्निटीज का, उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इसमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक्स लॉट, थैंक यू वेरी मच। मैं आग्रह करूँगी हमारे मुख्य अतिथि जी मिस्टर संतोष गंगवार जी की, वो आके हम सबको एड्रेस करें। सब मंच पर उपस्थित
सभी साथीगण और मेरे सामने उपस्थित भाइयों और बहनों, मित्रों, मैं क्षमा चाहूँगा कि आपके बीच में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाऊँगा, पर मैं देश में सत्ता परिवर्तन के बाद पिछले 3 वर्षों से लोग जो हमसे अपेक्षा कर रहे थे, हम उस अपेक्षा की कसौटी पर आगे किस ढंग से काम कर रहे हैं, ये पूरे देशवासी अब इन सारी बातों के बारे में जानना भी चाहते हैं और हमसे बहुत विश्वास और उम्मीदें कर रहे हैं। और हमारा विश्वास है कि देशवासियों की कसौटी पर हम लोग खरा उतरेंगे और पूरे 2 वर्ष के बाद जब हम देश की जनता के सामने जाएंगे तो हम अपने 5 वर्ष की बातों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और हमारा विश्वास है कि लोगों ने जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, उस कसौटी पर ये सरकार पूरी तरीके से खरा उतरेगी और हम उसी दिशा में उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर आप सभी साथियों ने ये जो कार्यक्रम किया है, मेरी शुभकामनाएं, और हम विश्वास करते हैं कि निश्चित रूप से आप सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं इसी सोच, इसी दिशा के हिसाब से काम कर रहे हैं कि 21वीं सदी में जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो इसके अच्छे परिणाम भी सामने नजर आएंगे। ये बात सही है कि वर्तमान में सरकार देश के विकास के लिए कई प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरू कर रही है और इसमें जो शुरुआत हमने की तो लोग तो अंदाजा नहीं लगा रहे थे। अब अगर जनधन योजना जो हम लोगों ने शुरू की और जब हम बताते हैं कि देश के अंदर 1971 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात जब की गई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब बैंक के दरवाजे आम आदमी के लिए खुल गए हैं। और मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर अब पिछले 2-2.5 वर्षों में हमने इस योजना का परिणाम ये देशवासियों को बताया कि अब तक करीब 30 करोड़ से अधिक लोगों ने बैंक में खाते खोल दिए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये बात अब मैं इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम लोग के घर से काम करता है। और इसमें भी विशेषता ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है, जैसे इस समय करीब 1/4 खाते ऐसे हैं जो 0 बैलेंस के साथ भी खोले गए। और ये वास्तव में हम जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, ये उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और फिर यंग इंडिया के लिए स्टार्टअप जैसी योजनाएं हो, और स्टार्टअप योजना के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो, और अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नौजवान जॉब सीकर की बात न सोचे और अब जॉब प्रोवाइडर की बात करें। और उसके हिसाब से जिस ढंग से हम काम कर रहे हैं, अब जिस मंत्रालय से मैं जुड़ा हूँ, अभी मुझे आए हुए 10-12 दिन हुए हैं और मैंने महसूस किया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों को ज़्यादा समस्याओं में न रहना पड़े और समाधान इस दिशा में हो। हम लोगों ने ये कोशिश की कि कैसे अधिक से अधिक सुविधाएं दें। और जब मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अब हम इस कोशिश में हैं कि हमारे जो इस समय 44 कानून थे लेबर के अंदर, हम इसको कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे कम से कम काम किया जाए, और इस दिशा में काम शुरू कर दिया। 44 को हम 4 तक ले जाना चाहते हैं और उसकी प्रक्रिया हम लोगों ने एक शुरू कर दी है। और इसलिए श्रम कानूनों में परिवर्तन और ऐसी सुविधाएं जो वास्तव में एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर दोनों के लिए लाभ की बात हो, इस हिसाब से हम सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं। और हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं और इस बात की प्रक्रिया में कि वास्तव में जिन 2 सेंट्रल एक्ट्स की वास्ता इस दिशा में पड़ता है, खासतौर से प्रोविडेंट फंड और ESIC, इसमें सहयोग करने के लिए आवश्यक निर्देश हम लोगों के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। और हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जो नए उद्योग स्टार्टअप योजना में लग रहे हैं, उनमें
विशेष प्रकार का सहयोग किया जाए। और कुछ अभी तक तो हम लोगों ने 3 वर्ष से 5 वर्ष तक जाने की बात कर रहे हैं कि 5 वर्ष तक इनका इंस्पेक्शन भी ना किया जाए और केंद्रीय कानूनों में जो हम सहयोग कर सकते हैं उस काम में हम लगकर काम करें। तो इसके अतिरिक्त कुछ लेबर कानून ऐसे हैं कि जिनका पालन राज्य सरकार के द्वारा होता है। उन कानूनों में भी हमने आग्रह किया है कि अगले 5 वर्षों तक इसमें इनको परेशान ना किया जाए और इस हिसाब से उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इन कानूनों में राज्य सरकारें उस बात को स्वीकार करेंगी कि जो जिस ढंग से उद्योगपति अपनी बात को सर्टिफाई करता है, सेल्फ सर्टिफाई करता है, उसको उसके हिसाब से माना जाए और उसके हिसाब से चला जाए। इस हिसाब से हम सब लोग काम कर रहे हैं और हम इस बात के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। सभी राज्यों को हम लोग कह रहे हैं कि अगले 5 वर्ष तक इस दिशा में इनके जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है उनको माना जाए और इसमें कोई अनावश्यक समस्या परेशानी न पैदा की जाए। मित्रों, मुद्रा लोन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और स्वरोजगार और ग्रामीण अंचलों में छोटे व्यवसायियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण योजना है। और इसके हिसाब से जो काम शुरू कर रहे हैं कि जैसे बैंकों से कहा गया कि इन ऋणों में कोलेटरल की ओर ध्यान न दिया जाए और इसकी शुरुआत हुई 8 अप्रैल से। अगर हमने इसकी शुरुआत की तो प्रतिवर्ष जो लक्ष्य दिया, मतलब आपकी जानकारी के लिए, वो लक्ष्य से ऊपर हम गए। अगर पिछले साल ये लक्ष्य 1,20,000 करोड़ का था तो बढ़कर 1,32,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया और ये भी छोटे छोटे कस्बों में, ग्रामीण क्षेत्र में और लोगों को स्वरोजगार की तरफ ले जाने की दिशा में काम कर रहा है। और अभी इसका इम्पैक्ट भी एसेस हो रहा है और मैं कोई यहाँ पर विशेष नहीं बोलना चाहूँगा। अब लोग इसमें अनुमानित आंकड़े भी कह रहे हैं, अनुमानित बातें भी कह रहे हैं। हमको स्वयं एक ऐसी संस्था ने बताया और एक ऐसी फिगर बताई कि साहब इस योजना के अंतर्गत इतने लोगों को रोजगार मिला है। तो मैं अभी यहाँ पर इस संख्या का उल्लेख करना नहीं चाहूँगा, पर एक बात सही है कि जब 1,32,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है और इस व्यापार करने के लिए दिया गया है तो रोजगार के अवसर तो निश्चित रूप से बढ़े हैं और उसका लाभ भी लग रहा है और लोगों को इनफॉर्मल नौकरियां भी मिल रही हैं। ये बात समझ में आती है, उसके हिसाब से हम सब काम कर रहे हैं। हम इस विशेषता के साथ कि एक अच्छा स्वस्थ वातावरण बने, आर्थिक वातावरण बने और इंडस्ट्री के लिए बहुत सरल श्रम कानून बने, इस दिशा की हम लोग चिंता कर रहे हैं। अभी हमने इस नई सरकार में आने के बाद पूरी कोशिश प्रारंभ कर दी है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने देश के सभी मजदूर संगठनों को बुलाकर इस दिशा में उनसे बात की थी और एक कोशिश की थी कि हम एक सबको मिलाकर सबकी सहमति से काम करें और आम बोलचाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके हिसाब से हम कैसे काम करें और कामगार भाइयों के हितों की हम लोग मिलकर चिंता करें। जैसा अभी शुरू में मैं कह रहा था, इसके बाद भी सरकार ने 44 श्रम कानूनों को 4 कोड में समूहबद्ध करने का फैसला लिया है। 4 कानून ऐसे थे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी तो उनको एक समाप्त करने का भी हम लोगों ने फैसला लिया। बाकी कानूनों को हम कैसे 4 कोड में हम समूहबद्ध करें, इसका हमने तय करा। आप सब जानते हैं कि मुख्य रूप से कोड ऑन वेज, जिसमें पूर्व से ही 4 एक्ट समाहित हो गए हैं और ये लोकसभा में पेश भी हो चुका है और ये हम चर्चा के लिए लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी में के पास भी इसको भेज चुके हैं। और कोड फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसमें 3 एक्ट समाहित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम हर पक्ष की वार्ता कर रहे हैं और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। मित्रों, हमारा प्रयास ये है कि हमारा मंत्रालय सहयोगी रूप में काम करे, सबको साथ लेकर काम करे और जिस ढंग से हमारा काम का तौर तरीका है उस ढंग से हम सब लोगों को विश्वास में लेकर देश के अंदर एक अच्छा औद्योगिक वातावरण, औद्योगिक माहौल बने, इसके हिसाब से हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और हमें लगता है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि एम्प्लॉयमेंट भी अच्छे ढंग से लोगों को मिले। हमारे देश की आवश्यकता के हिसाब से इस दिशा में हम सब लोग मिलकर काम करें और एटमॉस्फेयर यहाँ पर उद्योगों के बारे में पॉजिटिव रहे, लोगों की समझ में आए, इसके हिसाब से हम सब लोग बात कर रहे हैं। और आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार हो जो सबको साथ लेकर चलने की दिशा में काम करे
और इस दिशा में हम सब लोग मिलकर प्रयासरत हैं। मैं अधिक न बोलते हुए यहाँ पर आप सभी से आग्रह करूँगा कि श्रम संबंधी अगर कोई समस्या आपको नजर आती है, आपको लगता है कि यहाँ पर ये सुधार की आवश्यकता है, आप सभी से मेरा आग्रह है इस संदर्भ में कभी भी आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारे साथ बैठकर बातें कर सकते हैं और हमको सुझाव दे सकते हैं इस काम को एक से निस्तारित करना चाहिए। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। और अभी 4 दिन पहले जब मैंने देश के सारे व्यापारी उन सारे मजदूर संगठनों को बुलाकर बात की तो हमें लगा कि रुचि सबकी एक है कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में स्वस्थ वातावरण रहे, स्वस्थ माहौल रहे, पर सबको साथ लेकर चलने की दिशा सबका सुझाव ये था कि पर साथ लेकर चलने के लिए सबका हित ध्यान में रखकर हमको फैसला करना पड़ेगा। और इस समय देश के अंदर इस माहौल के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं कि वास्तव में आज देश के अंदर नौजवानों की संख्या और नौजवानों को काम अगर इस ओर हमने इस ध्यान में नहीं दिया तो कहीं ना कहीं कमी होगी, तो उस कमी की जिम्मेदारी भी हम पर है। तो हम लोग उसके हिसाब से मिलकर काम कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और इस विश्वास के साथ कि देश आम आदमी की जवाबदेही के साथ चल रहा है और आप सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। आप सभी के सुझावों का स्वागत करता हूं। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आपको श्रम मंत्रालय से संबंधित कोई भी सुझाव नजर आता है कि यहाँ पर ये समस्या, ये परेशानी है, इसका समाधान होना चाहिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं माफी चाहूँगा, ज़्यादा देर तक आपके बीच में नहीं रह पाऊँगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात की यहाँ समाप्त करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और बहुत ही अच्छी बात आपने हम लोगों को बताई कि जैसा आपकी बात का सार है, अगर हमारी नीयत ठीक है तो नीति भी ठीक होगी। ऐसी सरकार का यहाँ पर स्वागत है और अभिनंदन है। माननीय मंत्री जी 1989 से 6 बार लगातार सांसद रहे हैं, 7वीं बार हमारे बीच बरेली के लोकप्रिय सांसद। आपने काफ़ी चीज़ें बताई और इतनी सरलता के साथ बात रखी कि अगर श्रम से संबंधित कोई भी दिक्कत, श्रम कानून से संबंधित कोई भी दिक्कत और कोई भी सुझाव आपको हैं तो सीधे मंत्रालय में आप बात कर सकते हैं। समूचे देश की विकास की बात है। आपके अगर मैं अनुभव की बात करूं तो आप जैसी सरकार में वस्त्र मंत्रालय का अनुभव रहा है, आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री का अनुभव रहा है और अब श्रम रोजगार का भी अनुभव आपके पास है कि सरल है। आप हर एक से मिलना चाहते हैं, हर एक की बात सुनना चाहते हैं, लोगों के अधिक से अधिक निकट पहुंचना चाहते हैं। ऐसे व्यस्ततम समय के बावजूद भी हमें यहाँ पर आपने समय दिया है, उसके लिए आयोजन समिति आपका धन्यवाद करती है। और अब कुछ ऐसे सर यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अग्रणी काम किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो। हम खुद गौरवान्वित महसूस करेंगे कि आज आपके हाथों उनका यहाँ पर सम्मान थोड़ा सा उनका उत्साहवर्धन होगा। मैं अनुरोध करूंगा यहाँ के संचालक से कि मंच पर आएं और यहाँ पर क्रमबद्ध जो सूची है उसको एक बार माननीय मंत्री के हाथ से प्रोत्साहन। धन्यवाद। More than that, it is also about celebrating the efforts of the people who have performed and excelled in their respective sectors. So the first category of awards is India's Pioneer Education Award 2017. So we will start doing the honors. So the award for fastest growing university goes to Manipal University, Jaipur, Rajasthan. Let's put our hands together. And I would like to request Dr. Sandeep Sancheti, President, to come and receive the award. Congratulations. The award for fastest growing university also goes to Apex Professional University, Arunachal, Pradesh. And I would request ACHARYA SHRI DHANWANT, Chancellor, to come and receive the award. We welcome Mrs. PALLAVI FAUZDar. And the award for Best Institute Aid Students and Placement Support goes to Dr. NPL Group of Institutions, UP and Delhi. Congratulations. The award for Best for Innovative Education, Chairman, to come and receive the award. Congratulations.
This is a wonderful experience, wonderful feeling, and I'm really, appreciate the efforts of the incredible India, and that I'm getting award here. And it is wonderful meeting, summit, and we had the our Honorable Minister, Shri SANTOSH KUMAR GANGWAR ji. He's a very dynamic minister. और यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ और उम्मीद है आगे भी मैं इस समिट को अटेंड करता रहूँगा. Well, the event has been beautifully organized. Nothing could have been better than what has been done today. Honorable Minister had come, had shared his words of wisdom with us, and all the speakers have really given a very good insight about the different fields from where they come from. A very professionally managed event, and it's been really nice experience to be here. बहुत बहुत धन्यवाद ऑर्गेनाइज़र के लिए जिन्होंने इतना बेहतरीन कार्यक्रम आयोजन किया और बहुत अच्छा लगा इतने बड़े लोगों के साथ में बैठ के एक्सपीरियंस और कैसे इंडस्ट्री भारत की आगे बढ़े, कैसे लोगों को रोज़गार मिले, बहुत ही सुखद एहसास रहा. बिकॉज रोज़गार की तो प्रॉब्लम्स मोस्टली सभी जगह पर है, तो हमें उसको सोल्यूशन कैसे देना चाहिए, सरकार को उससे जल्द से जल्द रोज़गार भी देना चाहिए, बिकॉज मोस्टली सिटीज़ में रोज़गार काफ़ी प्रॉब्लम है. मुझे लगता है कि जैसे सरकार ने स्टार्टअप इंडिया को शुरू किया है, स्किल इंडिया को शुरू किया है, तो भारत में जनसंख्या है लेकिन वो जनसंख्या बहुत ज़्यादा दक्ष नहीं है, तो उस स्किल युक्त बना के अपने इंडस्ट्रीज़ को खोल के, अपने स्टार्टअप को खोल के बहुत सारे, जैसे मोदी जी कहते हैं कि रोज़गार देने वाले बनो, रोज़गार पाओ मत, तो मुझे लगता है एक करेज के साथ, इनोवेशन आइडियाज़ के साथ, जैसा कि सारे लोग यहाँ बता रहे हैं, स्टार्टअप किया जा सकता है और अच्छा रोजगार में युक्त किया जा सकता है. Event is wonderful. I would like to congratulate the organizers, Mr. Ajay Sharma and Mr. Bhatt and the other organizers. And we are from Dr. MPS group of institutions, and we received the award of the best institute in student support and placements. And the credit goes to the entire team, our chairpersons, coordinator A.K. Singh, our co-chairperson, Madam NEELAM Singh, our director Dr. Rajiv Ratan, and the entire team, the credit goes to them. And it's a wonderful feeling, and the event was very well organized, and Honorable Minister of State, Mr. SANTOSH KUMAR GANGWAR participated, and he awarded all the participants. So it's a wonderful event, and all the best for your future endeavors. Yes, I think this event is a very nice initiative to promote the entrepreneurs and promote a sense of responsibilities for the upcoming generation. And I really appreciate the people behind this event who has taken the initiation for this. Any message to convey the today's generation? I think I'll just say that the 3Ds, that is discipline, dedication and devotion, are very important, and without this, success will not come. Tell me your thinking about medical line. Yes, we are planning to launch some few products in the medical line, but it's still in process. बहुत अच्छा लग रहा है. आज डॉक्टर ने एक अच्छा कार्यक्रम चालू किया है. इस इवेंट से इंडिया के अंदर जो ऐसे कॉलेजेस थे, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर थे, जिनको कोई जानता नहीं था, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ अपनी पहचान बनाने के लिए. और इन्होंने जो रिसर्च करी है, उस रिसर्च में वास्तविकता में जो चेहरे सामने आए हैं, ये वास्तविकता में बधाई के पात्र हैं. ये कढ़ाई कंपनी पूरी, जिन्होंने वास्तविकता में जो आज जो अचीवमेंट यहाँ करवाए हैं, कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसको कौन देख रहा है, लेकिन कढ़ाई ने उस तीसरी नेत्र से उस मेहनत को देखा, सराहा और आज सबको एक मंच प्रदान किया. मैं कढ़ाई के लिए बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं. उनकी आने वाले भविष्य में जो भी कार्यक्रम होगा, इनके साथ हम जुड़ के कार्य करेंगे और भविष्य में जितने भी योजनाएं इनके थ्रू आएंगी, उन सब में इनका सहयोग करेंगे. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ये जो अवार्ड्स ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे आगरा से, ब्लैक इंक से हम लोग जुड़े हुए हैं. तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि दे गेव अस द रिकग्निशन टू आवर वर्क. लास्ट 32 ईयर्स से मैं एज अ पीडियाट्रिशियन अपने चावला नर्सिंग होम को चला रहा हूँ और मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, एंड दे हैव गिवन अस रिकॉग्नाइज किया हमको वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल हॉस्पिटल के रूप में. तो हमारा शुरू से ये रहा है कि जितने भी पेशेंट्स हैं, डॉक्टर पेशेंट रिलेशन इतना अच्छा होना चाहिए, दे शुड फील कंफर्टेबल, एंड वेर एवर इट इज़ पॉसिबल जो भी हम लोग इलाज मुहैया कराएँ वो जितना सस्ता हो पाए, दैट इज़ मच मच बेटर इन दी फेवर ऑफ दी पेशेंट. यही हमारा हेरा है, आगे भी इसी तरीके चलता रहे.
जो हम कहीं सोचते हैं समाज में हम बदलाव लाने के लिए, तो उसके लिए एक जो ये प्रयास है, ये छोटे छोटे प्रयास वही उन्हीं में से एक है। तो अच्छा लगता है कि आज हम लोग सब एक सोच को रखते हुए उनकी उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आज हम अपने भारत को एक उन्नत देश की तरह देखना चाहते हैं और उसी की तरफ सब हम लोग के प्रयास हैं। तो उन्हीं में से कुछ ऐसे महारथी कह लीजिए आप या एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिनको कि आज एज अवॉर्डी यहाँ बुलाया गया है, तो उन सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। It's a very good and I would say it's a very good effort, and I think it would have been more better had they involved local people so that more and more people could participate in there, and then the criteria of the entire selection should have been more clear so that more people could join. दूसरी चीज़ लेडीज़ के लिए अलग एक कैटेगरी बनानी चाहिए उसमें, क्योंकि लेडी एंटरप्रेन्योर्स आएंगी तो बहुत कुछ उसका बेनिफिट मिल सकेगा। I am feeling very grateful for the organizers for giving me such an award and feeling very happy. Happiness unlimited. हाँ, वैसे ही ज्वाइन किया जैसा हमने सोचा था, उससे बेटर ही है, उससे अच्छा है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा टेप इंडस्ट्री में है जिसमें हम सभी तरह की टेपें बनाते हैं। मेडिकल टेप भी बनाते हैं, शू इंडस्ट्रीज़ के लिए टेप भी बनाते हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए भी टेप बनाते हैं। उसी के लिए हमें ये अवार्ड मिला है। उन लोगों को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप लोग आगे आएँ, कुछ ऐसा काम करें जिस तरीके से हमें उनको प्राइज़ देने में बड़ा अच्छा लगे। जिस तरीके से आज अजय भाई ने इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज करा, ऐसे ही हम आगे उन लोगों को भी होनर्ड करें। हमारे बच्चे हैं और जैसे आज हमें मिल रहा है, होनर्ड हो रहा है, ऐसे ही उनको बच्चों को भी अगर हम प्राइज़ देंगे और हम देखेंगे कि हमारे यूथ आके नए नए आ रहे हैं, नए नए इन्वेंशंस कर रहे हैं, नई फैक्ट्रीज़ और नए मतलब आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, फिर हम उनको होनर्ड करें तो हमारे लिए प्राइड की बात होगी बहुत बड़ी। और मैं ये कहूँगा कि इस तरीके के अवार्ड जब हिंदुस्तान के किसी भी शहर में होते हैं, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसी भी पेशे में हो, और उनको इस तरीके के अवार्ड मिलते हैं तो आदमी को इंक्रेजमेंट होता है कि वो एक अच्छा काम करे, समाज को एक अच्छा संदेश दे। इन अवार्डों से आदमी को काम करने की एक क्षमता मिलती है और एक संदेश जाता है समाज में कि हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं उसके लिए हमको अवार्ड मिलता है, तो और आदमी सोचता है कि और अच्छा काम किया जाए, जिससे आम जनता में एक संदेश जाए कि अच्छे काम करने से लोगों को सम्मानित किया जाता है। और मेरा मानना यह है कि इस तरीके के अवार्ड फंक्शन होते रहने चाहिए। जो अच्छे लोग समाज में काम कर रहे हैं उनको इस तरीके की बहादुरी के अवार्ड मिलने चाहिए। सर, आपके अकॉर्डिंग मेडिकल लाइन में इस टाइम पर क्या चेंजेस होने चाहिए? देखिए, भारत देश के अंदर चिकित्सा प्रणाली बड़ी जटिल प्रणाली है। हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा गरीबी है, गरीबी के साथ साथ बहुत जटिल बीमारियां हैं जिनका सही तरीके से हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। सबसे पहले तो यह है कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जितने भी हैं, जिसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा बजट पूरे हिंदुस्तान सरकार जो है देती है शिक्षा और चिकित्सा के लिए, उनको ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले हमें चिकित्सा का क्षेत्र अच्छी तरह से करना चाहिए और उसके ऊपर एक कमेटी बनानी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे घपले होते हैं, सही तरीके से लोगों को इलाज नहीं हो पाता, वैक्सीनेशन नहीं हो पाती, समय पर लोगों को इलाज नहीं मिल पाता, मशीनरी नहीं लगा पाते और वो सारा पैसा ऊपर से लेके नीचे के लोग सारे लोग खा जाते हैं। जबकि मजबूरी होती है गरीब आदमी की, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत महंगा इलाज है कि आम जनता का बेसिकली आम जनता की हैसियत नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कर पाए। देश की सरकार को ये सोचना बहुत ज़रूरी है और सुनिश्चित करना चाहिए हर गरीब आदमी को अच्छे से अच्छा इलाज मिले इस देश के अंदर। उसका एक मौलिक अधिकार है, देश की जनता का ये मौलिक अधिकार है और सरकार से हम लोग भी मांग करते हैं और देश की जनता को भी मांग करनी चाहिए कि हर व्यक्ति को एक अच्छा और स्वच्छ इलाज मिलना चाहिए, वो भी सरकारी अस्पताल में। प्राइवेट अस्पताल तो बेसिकली होटल की तरह होते हैं, जिनकी जेब में पैसा है वो वहाँ पे अच्छा इलाज ले सकते हैं। गरीब आदमी को प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए। लेकिन चूंकि आदमी को जान बचानी होती है, मजबूरी होती है, चाहे वो घर बेचे या खेत बेचे या कोई अन्य किसी भी चीज़ को डिस्पोजल करे, अपने हर व्यक्ति को, परिवार के मेम्बर को बचाना और अच्छा इलाज कराना वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता है। अच्छा इवेंट है, हम लोग एक प्रोत्साहन के लिए अच्छी उम्मीद मिल रही है यहाँ से। मतलब एक अच्छा इवेंट किया है अजय जी ने, प्रदेश जी ने, और ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए। इससे हम लोग जो एंटरप्रेन्योर लोग हैं इनको एक अच्छी वो आगे के लिए आशा मिलती है, आगे के लिए काफ़ी उम्मीद मिलती है, मतलब आगे के लिए। And I really congratulate all the organizers for this marvelous event. What will you convey the message to today's generation? The thing is that we have taken birth as a human being, and definitely human being is the greatest creation of Almighty God, and we have to attain, we can do
whatever we want to do, and that much capacity we are having, and God has also empowered us. We have to understand our capacity and capabilities, and we should have that willpower, and willpower can give anything, whatever it is we want to do. And let us not underestimate ourselves. We can do wonders. That's quite possible.